Good evening, students. Today, I would like you to know that Anil sir has he has throat infection and he's not well, so he's not here. I will be taking a class, so I hope you will enjoy it the same way you enjoy his class. Okay. So we were discussing the problem solving, right? Problem solving on limits. So I hope you are very familiar with limit so that we can solve today's problem very, very, very easily. So let's start today's chapter, which is limits problem solving. Okay. I hope my voice is clear. Yes. Okay. Chalo. So first, I would like to discuss method to solve what indeterminate forms. There are various methods to solve indeterminate forms. The first indeterminate form is infinity minus infinity and 0 into infinity. So to solve these types of form, what is step 1? Step 1 is to convert these forms into 0 upon 0 or infinity upon infinity. Let me tell you one clear thing that any question on limit can only be solved if we convert the indeterminate forms into either 0 upon 0 or infinity upon infinity. So, if we got any indeterminate form, we can only solve the limit after converting into either 0 upon 0 or infinity upon infinity. So this is please a basic rule you have to stick in mind that any indeterminate form can only be solved after converting into 0 upon 0 or infinity upon infinity. Yeah. So before proceeding, my name is Keval Parmar. I will be taking today's class. I hope by tomorrow Anil sir gets well, so he'll be taking tomorrow's class. Okay. Let's proceed forward. After converting into 0 upon 0, there are various methods. There's a factorization, rationalization, or you can use LH rule, L'Hopital's rule. So here is, let's see the first question. Limit x tends to infinity. If we check the indeterminate form, x square, in x यहाँ पे infinity रखो, this all will become infinity. Why infinity? Because it is infinity square. Infinity square में से infinity minus हो रहा है, तो infinity ज़्यादा बड़ा है. Minus pi into infinity is also infinity. So this is infinity minus infinity form. So I need to convert into either 0 upon 0 or infinity upon infinity. So how do we convert? Very simple. Square root दिखा means क्या करने का? Rationalize करो. Square root दिखा means rationalize करो. So I will get limit x tends to infinity. If I rationalize it, rationalize means multiply and divide with conjugate. Minus 3x minus 5x. This is the question. I need to multiply and divide with conjugate. So what is the conjugate here? Same bracket plus 5x upon same bracket plus 5x. After rationalizing, what we'll get? We will get a square minus b square. A minus b into a plus b, a square minus b square. इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. आई विल गेट 25x square minus 3x a square minus इसका स्क्वायर करो 5x the whole square is again 25x square. And denominator में क्या बचा रहेगा? Same the bracket plus 5x. Now, if you notice from numerator 25x square will get cancelled. So I will be left with limit x tends to infinity. Now let's write the whole term.
Here I am just using the bracket. We'll get minus 3x upon under root of 25 x square minus 3x plus 5x. Now let's check the indeterminate form again. If I put infinity, ऊपर तो आ गया infinity upon डिनोमिनेटर में infinity square, ये तो infinity plus infinity, infinity plus infinity, this is infinity plus this is also infinity. Infinity plus infinity is infinity. So we got infinity upon infinity indeterminate form. Now, how to solve infinity upon infinity indeterminate form? If you all know, we take the highest power common. Or let me tell you one trick कि हाईएस्ट पावर देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और उनके कोएफिशिएंट्स मेरा आंसर होंगे, उनके कोएफिशिएंट्स मेरे आंसर होंगे. सो इफ आई डू बाय दैट लॉजिक, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर किसका है? एक्स का. एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? -3 अपॉन डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कौन सा है? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है? 25. बट प्लीज नोट एक चीज की 25 रूट के अंदर था. सो माय फाइनल आंसर विल बी -3 अपॉन 5. सो सिंपल. It is the best way to solve infinity upon infinity. Just take the coefficients of the highest power from numerator and denominator. So my answer is simple, -3 upon 5. So let's move on to next question, which is this. It is a very interesting question which was asked in previous year J. Previous year means it was, I think, 2008 or 9. Okay, it's okay. Any just solve this question. Here it is given that limit of this function is 1. Now let me tell you, limit of function का आंसर आ गया है. It has an answer. If it has an answer, implies that limit exists. Obviously, अगर limit exist करेगी तभी तो मुझे आंसर मिला होगा 1. And limit only exists if there is an indeterminate form. Please hear me very carefully. Limit exist तभी करेगी जब भी indeterminate form होगा. क्योंकि let's say अगर indeterminate form नहीं है तो मुझे limit की जरूरत नहीं है. Suppose I say limit x tends to 3 x upon x minus 2. ये देखो डायरेक्ट सेक्शन करो. 3 upon 3 minus 2 which is equal to 3 upon 1 which is equal to 3. So मुझे लिमिट की जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्यों? Because it is not an indeterminate form. लिमिट की जरूरत कभी होती है? Only when we have an indeterminate form. So here limit exists, meaning limit exist कर रही है, meaning indeterminate form exists. So let us check IDF. Sorry, don't mind my handwriting. My handwriting is very, very bad. Okay, so let's check the indeterminate form. Limit का क्वेश्चन पहले हमेशा सॉल्व कैसे होता है? As you all know, always step 1 is to check the indeterminate form. If I have x equal to 0, I will get under root of b minus 2 upon 0. Now ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है. अगर इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाना है तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा? 0. That means under root of b minus 2 should be equal to 0 because indeterminate form exists because limit exists. So very simple, under root of b will be equal to 2. तो b की वैल्यू क्या आ गई? 4. चलो, now I got the value of b. Now let's go towards the value of a. ये स्टार मार्क. चलो, now b की वैल्यू 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So I will get limit x tends to 0 under root of ax plus
4 minus 2 upon x is equals to 1. अभी indeterminate form आ गया है. What indeterminate form it is? 0 upon 0. So you have two ways. Either you can use L'Hopital और since root है, previous question में देखा था जब भी root है क्या करना है मुझे? Rationalize. So rationalize करो या तो क्या use कर लो? L'Hopital. So I think मैं तो L'Hopital use करूंगा because objective paper है. So L'Hopital क्या बोलता है? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर करो. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ए एक्स प्लस 4 इंटू ए आएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 1. जैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो गया तो मेरे पास क्या बचा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 इंटू ए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ax plus 4 is equals to 1. Now you can check indeterminate form गायब हो गया है. अगर indeterminate form गायब हो गया है मतलब indeterminate form एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लिमिट की जरूरत नहीं है. लिमिट की जरूरत नहीं है तो x की जगह पे क्या पुट कर दो? 0. तो मुझे क्या मिलेगा? a अपॉन 2 इंटू ये तो 0 हो गया अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1. तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 इज इक्वल्स टू 1. सो a की वैल्यू क्या आ गई? 4. सिंपल. a की वैल्यू इज 4, b की वैल्यू इज 4. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो ही लिमिट है. जैसे ही मेरा यहाँ पे देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया मैंने लिमिट भी निकाल ली. ओके, सो लेट प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. So this लिमिट यार हम लोग के पास ऑप्शन भी है. सेम करना है, क्या फाइंड करना है? ए और बी की वैल्यू. सो पहले तो मुझे लगता है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए. ओके, सो लेट्स टेक एलसीएम. लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी. अगर मैंने एलसीएम लिया तो नीचे तो पूरे में आ जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4. बाद में हम लोग इक्वेट कर लेंगे. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. ओपनिंग द ब्रैकेट्स आई कैन राइट एक्स स्क्वायर. आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस, ओके वन सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1. ओके, सो ऊपर आई कैन सिंप्लीफाई मोर बाय टेकिंग कॉमन. सो एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर, अच्छा ये दोनों टर्म में से आई कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन. सो मेरे पास क्या बचेगा? 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर. फिर एक्स वाली टर्म्स कौन सी है? ये एक एक्स और ये दो. सो इफ आई टेक एक्स कॉमन फ्रॉम देम मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और लास्ट में कौन सी टर्म बची? कांस्टेंट विच इज 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1. नाउ अगर आप लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करो, सो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या आएगी? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी. यू कैन चेक इट योरसेल्फ, प्लीज डू इट. सो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट अभी मैंने बताया था क्या होता है. इफ आई गेट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट मीनिंग आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर्स. बट लेट मी टेल यू, infinity upon infinity format will give a valid answer only when the highest powers of numerator and denominator are same. Please note,
infinity upon infinity will give a finite value only if numerator and denominator have same dominance. Do you understand what is meant by dominance? Dominance means in this case दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कौन सी है? एक्स स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कौन सी है? एक्स. सो एज यू कैन सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट पावर अलग अलग है. इफ द हाईएस्ट पावर इज डिफरेंट आई विल नॉट गेट अ फाइनाइट वैल्यू. जबकि मुझे यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या दी है? 4. अगर लिमिट की वैल्यू 4 दी है मतलब मुझे एक वैल्यू मिल रही है. वैल्यू कभी मिलेगी? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डोमिनेंस मतलब पावर सेम होगी. यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर क्या है? एक्स स्क्वायर. डिनोमिनेटर की एक्स. तो अगर मुझे पावर सेम करनी है तो न्यूमरेटर की भी पावर क्या होनी चाहिए? एक्स. एंड फॉर दैट इफ न्यूमरेटर की पावर एक्स होनी चाहिए इंप्लाइज 1 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा. दिस इज द मेन पार्ट. इफ 1 माइनस इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब. इफ एक्स स्क्वायर गोज गायब then I will only be left with x. And if I am left with x, numerator and denominator have the same power, same dominance, meaning I will get a finite answer. So here I can write a equals to 1. I got the value of a equals to 1. So means option C is gone, option D is gone. We are left with A and B. So if I put a equal to 1 here, ये गायब हो गया. So I will get limit x tends to infinity. I will be left with 1 minus a minus b of x plus 1 minus b upon x plus 1. इसका आंसर क्या बोल रहे वो लोग? 4. Now the dominance is same. Please note the dominance is same. Meaning क्या? Meaning my answer will be, if you remember, highest power के coefficients will be my answer. Okay? Highest power के coefficients will be my answer. So यहाँ पे highest power के coefficient ऊपर भी power 1 नीचे भी power 1 ऊपर. अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं. We don't have space. Let's move here. Okay. ऊपर की power x का coefficient is 1 minus a. ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. अच्छा अभी बाद में करते हैं. माइनस बी. डिनोमिनेटर के पावर भी हाईएस्ट पावर एक्स उसका कोएफिशिएंट 1 विल बी इक्वल टू 4. इंप्लाइज ए की वैल्यू क्या है? 1. तो 1 माइनस 1 कैंसल. आई विल गेट माइनस बी इक्वल्स टू 4. इसका मतलब b इक्वल्स टू माइनस 4. सो a is 1, b is minus 4 means correct option is B. I hope it is clear. छोटी छोटी बातें आर कॉल बेसिक कंसेप्ट्स लाइक बेसिक्स एकदम. infinity upon infinity only exists if dominance is same. Here it means the power should be same. तो पावर नीचे की x थी ऊपर की भी क्या होनी चाहिए? x. That's why 1 minus a is 0. And after that infinity upon infinity format का आंसर when do we get infinity upon infinity का आंसर? How do we get? By taking the coefficient of highest power from numerator and denominator. Let's move on to next. Okay, next are some basics, not questions. Algebra of limits. Though if I add two functions and then take limit, meaning पहले लिमिट ले लो फिर ऐड कर लो. यहाँ पे क्या किया है? दो फंक्शन को ऐड किया है फिर लिमिट ली है. यहाँ पे लिमिट लेके ऐड किया है. इट इज सेम. सेम इज फॉर प्रोडक्ट. दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिमिट लो या दोनों फंक्शन की लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर लो. इट इज द सेम. सेम इज विद डिवीजन. दो फंक्शन को डिवाइड करके लिमिट लो या दोनों फंक्शन की लिमिट लेके डिवाइड कर लो. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या? 0 नहीं होना चाहिए. दिस इज बेसिकली अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एज यू ऑल माइट हैव नोन. दिस इज मोर फॉर्मूलाज कि अगर कोई भी कांस्टेंट है के तो उसको मैं लिमिट के बाहर लेके जा सकता हूं. अगर पावर है
तो लिमिट पावर में भी चली जाएगी। सी हियर लिमिट एक्सटेंड्स विद जी ऑफ एक्स, पावर में भी चली गई लिमिट। अगर मॉड है तो लिमिट मॉड के अंदर भी चली जाएगी। मीन्स बेसिक्स, खाली बेसिक है लिमिट का। ओके हाँ, ये एक टेबल जस्ट बेसिकली नॉर्मल टेबल। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो दोनों का एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मीनिंग ये लिमिट होना चाहिए यहाँ पे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सो अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है, एक डज नॉट एग्जिस्ट, देन एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में वी कैन नॉट कमेंट, दैट इट मे आल्सो एग्जिस्ट, मे नॉट आल्सो एग्जिस्ट, एंड सेम इज फॉर both does not exist. If both does not exist, obviously addition and subtraction may exist, no comments, and multiplication division also no comments. So, and these are your basic formulas. I hope you remember them. 1 plus x upon x is 1, ln a 1, n a raised to n minus. Okay. Next, sin x upon x is 1, tan x upon x is 1, sin inverse x upon x is 1, tan inverse x upon x is also 1. So we are done with formula and algebra of limits. Two things, formula and algebra of limits. These two slides are formula. This one and this one. So after this, these slides were algebra of limits. Addition करो, multiplication करो, division करो. Limit सब में क्या हो जाती है? Basically split. Power में भी split, mod में भी split. Let's look at some examples. हाँ. Okay, what is this? Yeah. चलो, let's look at this example. पहले क्या करना है? Let's check the indeterminate form. So 0 sin inverse 0 is 0, tan inverse 0 is 0 upon 0 cube. So basically indeterminate form is 0 upon 0. Means 0 upon 0 indeterminate form. The best way to solve is use LH rule. We'll use L'Hopital. Okay. We can also use expansion, but expansion हम लोग बाद में देखेंगे. Let's use L'Hopital. Limit x tends to 0. चलो, sin inverse x derivative 1 upon under root of 1 minus x square. Tan inverse x derivative 1 upon 1 plus x square upon x cube का derivative 3x square. Let's again check the indeterminate form. 0 रखा, ये 1 आया, 0 रखा, ये 1 आया, 1 minus 1, 0 upon 0. Indeterminate form is still 0 upon 0. So again हम लोग क्या यूज करेंगे? LH rule. इसका डेरिवेटिव अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव विच इज माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x द होल स्क्वायर इनटू बाय चेन रूल इसका डेरिवेटिव विच इज 2x the whole upon 3x square का डेरिवेटिव, x square का डेरिवेटिव will be 2x और वो 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6x. Now let us first simplify this. यहाँ पे ऊपर से I can take 2x common. So if I take 2x common, 2x common, अंदर क्या बचेगा? माइनस तो यहाँ पे रह गया, माइनस 1 अपॉन 2 under root of 1 minus x square. 2x common, minus minus plus 1 upon 1 plus x square the whole square upon denominator is 6x. तो यहाँ से x और x cancel, 2 1s are 2 3s are. And now surprise surprise, the indeterminate form has gone. Indeterminate form गला गया, तो लिमिट की जरूरत नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूट x की जगह पे क्या
0, तो न्यूमरेटर में विल गेट -1/0 2 प्लस यहाँ पे 0 का 1/1 अपॉन डिनोमिनेटर में पहले से कौन है 3, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ and half upon 3. Half upon 3 is 1 upon 6. This is my answer. I hope LH rule is clear because you will need derivatives. And I hope you are very familiar with derivatives, formulas and all. Chain rule is a bit tricky according to me. That's why I tend to make some mistake. I hope यहाँ पे मैंने कोई mistake नहीं किया है. अगर किया है तो you can point it out. No worries. Okay. So I guess नहीं किया है because 1/6 आंसर आया तो राइट ही होगा. Let's do next. Yeah. Next we have series expansion. जो मैं बोल रहा था. We can do many sums ऐसे like this if we know the expansion. I hope तुम लोग को ये सब expansions पता है. Basic expansions है. One second. Okay. Basic expansions है e raised to x. Very important. A raised to x ln1 plus x. बेसिकली ये सब याद रखने का होता है और कुछ नहीं. आई डोंट रिकमेंड दीज टू, बट ये तीन तो करना है. साथ ही साथ साइन कॉस और टैन. बिलीव मी इट बिकम्स वेरी 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 सिंपल इफ वी नो द एक्सपेंशंस. सो ओनली 6 यू हैव टू रिमेंबर. e raised to x, a raised to x, ln1 plus x, sin cos and tan. So if you have revised this, let's take an question. Let's take an example. Okay. So here, जैसे ही ये 6 में से एक टर्म दिखता है e raised to x, a raised to x, ln1 plus x और sin cos और tan, we can directly use expansion. So I can write, अच्छा आदत खराब, we have to first check the indeterminate form. e raised to 0 1 minus 1 minus 0, तो ऊपर तो 0 आ गया, डिनोमिनेटर में भी it is 0, so it is 0/0 form. So I can use expansion of e raised to x. Now एक hint, expand वहां तक ही करना है जहां तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर मैच नहीं होती. दैट इज यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर x स्क्वायर है, तो e रेज टू x को वहां तक ही एक्सपांड करो जब तक मेरा x स्क्वायर का टर्म नहीं आ जाता एक्सपांशन में. e रेज टू x को वहां तक ही एक्सपांड करो जब तक x स्क्वायर का टर्म नहीं आता, मतलब x स्क्वायर तक ही एक्सपांड करो. दिस इज द बेसिक रूल. बिकॉज हायर पावर लिख के फायदा नहीं है, वो ऐसे ही 0 हो जाती है. So, e रेज टू x को वहां तक एक्सपांड करना है जहां तक x स्क्वायर का टर्म है. e रेज टू x का एक्सपांशन इज 1 plus x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर, मतलब यहाँ तक. Only till here because the denominator has x square. So I can write 1 plus x square upon 2 factorial, बस -1 minus x upon x square. As you can see, 1 minus 1, x minus x gone. तो हम लोग के पास बचा क्या? लिमिट x tends to 0, x square upon 2 factorial is 2 into x square. Very good, both cancelled. इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब, तो लिमिट का जरूरत ही नहीं है. हटाओ लिमिट को, मेरे पास आंसर क्या बचा? 1/2. देखा? सो इफ यू यूज एक्सपेंशन लाइक 2-3 स्टेप में विल गेट मार आंसर. Expansion is a very 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 good tool for solving limits. तो अगर e raised to x log of 1 plus x और क्या था a raised to x sin cos or tan, if we see any of these, best is to use expansion. Now एक और एग्जांपल जो अभी अभी मेरे माइंड में आया है. लेट्स टेक दैट लिमिट x tends to 0. एक्सपेंशन का ये एक वेरी क्लासिक एग्जांपल. यू मस्ट हैव डन इट इन योर lectures also.
sin x minus tan x upon x cube. Let's take indeterminate form. Sin 0 0 tan 0 0, तो 0 upon 0. ओके, जैसे ही साइन और tan दिखा, what should my heart say? Not my mind, heart. What should my heart say? कि use expansion. sin x का expansion. अच्छा, कहां तक expand करना है? टिल x क्यूब, बस उसके आगे नहीं करना है, क्योंकि वो वैसे भी क्या होने वाला है? 0. तो वी यूज एक्सपांशन अप टिल x क्यूब. साइन x का यहां तक ही करना है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 10x का भी यहां तक ही करना है. ओके, सो साइन x का इफ यू रिमेंबर इट वाज लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस एक्स क्यूब, भूल गया, अपॉन 3 फैक्टोरियल भी है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 10x का क्या था? x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स क्यूब. ओके, सो ऊपर से x माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड. आई विल बी लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 factorial is 6. So minus x cube upon 6 minus x cube upon 3, the whole upon x cube. एक काम करो, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन ले लो? x cube we can take common and cut it out, right? हाँ, we can take common from numerator as x cube. So हम लोग को क्या मिलेगा? -1/6 -1/3 अपॉन एक्स क्यूब कैंसल, इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म, तो लिमिट का जरूरत नहीं है. तो माय आंसर इज -1/6 -1/3. इफ आई टेक एलसीएम आई विल गेट -1 -2/6. आई होप आई एम राइट. एलसीएम राइट लिया है ना? 6 which is -1/2. So my answer is -1/2. Chalo. Next, there is one more example. This you can obviously solve it by the limit, like by your formula, standard limits. But यहाँ पे क्या दिया है? If limit is equals to k, then k का वैल्यू ढूंढना है. Okay. So expansion में please note, expansion में the log of 1 plus x, 1 चाहिए था इधर 1. यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3. So basically I can take 3 common. So my answer will be limit x tends to 0. log को ln लिख रहा हूं. 3 कॉमन, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 3. सेम यहां से भी 3 कॉमन, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 3, the whole upon x. Okay, so if you know the properties of log, अगर आपको log का प्रॉपर्टीज पता है, तो प्रॉपर्टी होता है log of m into n is equals to log of m plus log of n. तो यहाँ पे मैं वही यूज कर रहा हूँ, हो जाएगा ln3 प्लस ln1 प्लस x अपॉन 3 माइनस ln3 प्लस ln1 minus x upon 3, the whole upon x. As you can see, ln3 minus ln3 will get cancelled. Now I can use the expansion of log. log का expansion क्या था याद है? log of 1 plus x. मेरे पास x की जगह पे क्या है? x by 3. तो x तक ही करना है. क्यों x तक ही करना है? बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है? खाली x. तो बेसिकली मुझे खाली x ही लिखना है. यहाँ पे x की जगह पे कौन है? x by 3 माइनस
x की जगह पे कौन है, प्लीज नोट x/3 नहीं, -x/3. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये बहुत मिस्टेक होता है बिकॉज लॉग में वी हैव 1 + x. सो हियर इट इज माइनस अपॉन x. ओके, आंसर इज हियर. ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सेम एज प्रीवियस सम. लिमिट x टेंड्स टू 0. x कॉमन ले लिया और क्या होता है 1/3. माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन x. x एंड x कैंसल्ड, सो इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब. सो लिमिट का जरूरत नहीं है. आंसर इज 1/3 + 1/3 which is 2/3. So my correct option is C. I hope it is clear. Okay, so expansions are very useful. फटाफट क्वेश्चन आता है एक्सपांशन से. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. लिमिट ऑफ द फॉर्म. देखो, दो फॉर्म होते हैं. हाँ, यहाँ पे मिस्टेक आई. इट इज 0 infinity raised to 0. There are three forms where we have powers. What do you mean by powers? Like exponents. So those are called power indeterminate forms. Those three forms are 1 raised to infinity, 0 raised to 0, and infinity raised to 0. These are called power indeterminate forms. याद है मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के फर्स्ट में व्हाट आई सेड, एनी क्वेश्चन ऑन लिमिट कैन ओनली बी सॉल्व्ड इफ the indeterminate form is either 0/0 or infinity/infinity. So what should I do here? Since I have power, मेरे क्वेश्चन में पावर आएगा 1 raised to infinity, 0 raised to infinity, infinity raised to 0. So I need to convert these forms into 0/0 में convert करो या तो infinity/infinity में. So there is one very special tool जो कि अपनी हेल्प करता है पावर को नीचे लाने में, and that is log. That is log. Which property of log? Log of m raised to n is equals to n log m. By using this property, ये जो पावर है वो नीचे आ जाती है. So in power indeterminate forms, especially ये दो, कौन से, 0 raised to 0 और infinity raised to 0. In case of these forms, we always take log on both the sides. 1 raised to infinity में we have different method to solve. We can also solve by taking log on both sides. No worries there also for 1 raised to infinity. But generally for 0 raised to 0, infinity raised to 0, we always take log on both the sides. So in this question, अगर दोनों साइड पे log लेना है तो we should have both sides. तो दो साइड लेने के लिए मैंने बोला let L be equal to limit x tends to 0 cosec x raised to the power 1/log x. अच्छा, let us check the indeterminate form. Okay, cosec 0 is infinity raised to log 0 is infinity and 1/infinity is 0. So it is infinity raised to 0 form. तो क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. तो हो जाएगा log L. ऑब्वियसली हम लोग बेस कौन सा ले रहे हैं, e. यहाँ पे आई विल गेट लिमिट x tends to 0 log of cosec x raised to 1/log x था, वो आगे आ जाएगा 1 अपॉन, मतलब अपॉन log x. नाउ अगेन चेक द इंडिटरमिनेट फॉर्म. लॉग लेने के बाद मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है 0 0 या फिर infinity/infinity में. चेक कर लेते हैं. log 0 क्या होता है, infinity, राइट ना. या cosec 0 is infinity, log infinity is also infinity. I hope it is clear. This is basically infinity/infinity format. Infinity/infinity format, best way to solve कोएफिशिएंट. बट यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ही नहीं है क्योंकि फंक्शन ही लॉग वाला है. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज
LH रूल, लॉपिटल यूज कर लो. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, log, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन cosec x into derivative of cosec x is minus cosec x into cot x upon log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x cosec x कैंसल. क्या मिला मुझे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cot x मिला, तो माइनस cot x, इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ. 1 अपॉन x है ना, तो ऊपर लगे हो जाएगा इंटू x. cot x को आई कैन राइट 1 अपॉन 10x, तो माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 10x, और ऊपर पहले से कौन है? x, और मुझे इसका लिमिट पता है. x अपॉन 10x का लिमिट इज 1. दिस इज बेसिकली -1 into 1 which is equal to -. So my correct option is B. नहीं, -1 तो है ही नहीं. क्या मिस्टेक किया हम लोग ने? ये -1 किसका वैल्यू है? -1 किसका वैल्यू है? log L का. ये मिस्टेक यहाँ पे हर बार होता है, मेरे से भी बहुत बार होता है. आई ऑल्सो मेक द सेम मिस्टेक मेनी टाइम्स. सो इफ आई नीड, मुझे किसका वैल्यू चाहिए था? ये लिमिट का, मतलब बेसिकली किसका वैल्यू चाहिए था? एल का. एल का वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग ले लो. एल विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू -1 विच इज 1 अपॉन ई. सो माय करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन ई विच इज माय ऑप्शन सी. सो ये इधर ये मिस्टेक मत करना. यहाँ पे तो ऑप्शन में -1 था नहीं. मेनी अ टाइम देयर इज -1 इन द ऑप्शन. Every time click -1. Okay, let's take another example. This one. Limit x tends to 0, x raised to 10x. Indeterminate फॉर्म चेक करते हैं. क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? x की जगह पे क्या रखना है? 0. So 0 tan 0 is 0, 0 raised to 0 फॉर्म. क्या करना है? टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स. दूसरी साइड के लिए, बोथ द साइड्स के लिए दूसरी साइड पे लॉग होना चाहिए. तो लेट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x रेज टू द पावर 10x. लॉग लूंगा तो ये लॉग L, ऑब्वियसली बेस इज E, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log of x. भी रेज टू 10x वो आगे आ जाएगा. सो 10x इंटू log x. चलो चेक द इंडिटरमिनेट फॉर्म. tan 0 is 0, log 0 is infinity as we have seen. तो इंडिटरमिनेट फॉर्म is 0 into infinity. नहीं, नहीं चलेगा. 0 infinity नहीं, आइदर 0 upon 0 होना चाहिए, या तो infinity upon infinity. So what I did to convert into it, 10x को नीचे लेके जाके I can write 1 upon cot x. So now see, log 0 infinity, cot 0 is also infinity. So now my indeterminate form is infinity upon infinity, meaning LH rule, simple, last time जैसा. So I can write limit x tends to 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x, cot x का माइनस cosec square x. Okay, so limit x tends to 0 -1 upon x into cosec square x. cosec square x किसको पसंद है? Who likes cosec? Convert into sin. Limit x tends to 0, cosec के ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sin square x upon x.
ओके, नाउ साइन स्क्वायर को आई कैन सेपरेट लिमिट x टेंड्स टू 0। कैसे 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 सेपरेट करूं? एक साइन बाहर ले लो, साइन इंटू साइन, और एक साइन को x दे दो। मुझे ये पता है साइन x अपॉन x क्या होता है? 1। सो मुझे क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 होता है। एंड दिस इज नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है तो लिमिट का जरूरत नहीं है, x यहाँ पे 0 रख दो। तो लिमिट का जरूरत नहीं है तो फिर मैंने क्यों लिखा? लेट मी रब इट। आई विल डायरेक्टली गेट दिस इज -1 और इसका वैल्यू क्या आया? 0। आंसर इज 0 नहीं, नो, आंसर 0 नहीं है। ये 0 किसकी वैल्यू है? ln l की वैल्यू इज 0। तो l की वैल्यू इज e रेज टू 0 विच इज 1। डोंट फॉरगेट। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वरना आई थिंक 90% ऑफ यू ऑल मस्ट हैव मार्क 0 एंड यू हैव लॉस्ट योर 5 मार्क्स। 4 मार्क तो राइट होने के और -1 नेगेटिव मार्किंग के, -5 हो जाता अभी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू इंफिनिटी। सो 1 रेज टू इंफिनिटी, जैसे मैंने बोला, या तो यू कैन टेक लॉग, या तो वी प्रिफर दिस मेथड। ये फॉर्मेट में लेके आओ, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इक्वल्स टू ई। देखो इसका फॉर्मेट क्या है? एक्स की जगह पे 0 रखो, 1 प्लस 0 रेज टू 1 बाय 0, दैट इज 1 रेज टू इंफिनिटी। फॉर्मेट इज 1 रेज टू इंफिनिटी। और अगर ऐसा फॉर्मेट है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 का वैल्यू क्या आएगा? ई। या फिर अगर एक्स टेंस टू इंफिनिटी है तो खाली ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, अंदर 1 बाय एक्स आ जाएगा और बाहर एक्स। आंसर तो सेम ही रहेगा विच इज ई। नाउ लेट मी टेल यू, हर बार एक्स की जगह पे एक्स होना, या ऑब्वियसली एग्जाम में एक्स की जगह पे एक्स नहीं आएगा। मेनी अ टाइम्स आई कैन गेट समथिंग 1 प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन साइन एक्स। देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये वाला जो है एक्स की जगह पे कौन आ गया? साइन एक्स। बट स्टिल एक्स यहाँ पे 0 पुट करो तो ये 1 प्लस 0 1 एंड 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट ही है। तो अगर x इज टेंडिंग टू 0 एंड वी गेट 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट, आंसर इज ई। डोंट फॉरगेट दिस। x की जगह पे हर बार x होना थोड़ा मुश्किल है। So I hope it is clear. So let's move on to the question, how question comes. मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, by taking log and by using this formula. Whichever you find easier, you can use. So this is the question. पहले क्या चेक करना है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये तो 1 आ गया और ये क्या आया? cosec 0 is infinity. So my indeterminate form is 1 raised to infinity. 1 रेज टू इंफिनिटी में मुझे फॉर्मेट चाहिए 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स होना चाहिए, जबकि लिमिट कहां पे जा रही है? 0 पे। तो मेरे पास 1 प्लस एक्स तो है। नाउ सी हाउ स्मार्टली आई गेट दिस फॉर्मेट। एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स तो है, 1 बाय एक्स है क्या? नहीं है। तो मैं खुद से दे दूंगा ना, लेट मी राइट एक्स अपॉन एक्स। वैसे भी कैंसिल होके 1 ही रहने वाला है, और पहले से कौन है वहां पे? cosec x. Now I can modify this. See, if you know exponents, I can write 1 plus x raised to 1 by x. और जो था, कौन था? x into cosec x.
उसको बाहर जाके जाओ। तो देखो ये फॉर्मेट हो गया 1 + x⁻1/x। बट अभी भी पावर में x इंटू कोसेक एक्स है। कोसेक एक्स किसको पसंद है? किसी को नहीं। किस में कन्वर्ट कर लो? साइन में। सो कोसेक इज 1/sin। सो x/sin। नाउ इफ यू नो एल्जेब्रा ये लिमिट पावर में भी चले जाएगा। सो आई विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁻1/x। और पावर में भी लिमिट चले गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 x/sin x। दोनों का वैल्यू भी नो। दोनों का वैल्यू भी नो। चलो 1 + x⁻1/x इसका वैल्यू क्या होता है? e। और इसका वैल्यू क्या होता है? 1। and e⁻1 is e. So my answer is e. I hope you understood this very clearly. Okay, how to use the formula? Just develop that pattern 1 + x⁻1/x. Okay, now I said कि मैं इसको किससे करने वाला हूं? और एक जल्दी जल्दी जल्दी। Do we have a blank slide here? ओके ओके, हाँ, किससे करने वाला हूं मैं वापस इसको? जल्दी। Which way should I do this again? हाँ, by taking log on both the sides. Let's do this by taking log on both the sides. So पहले मैं क्या लिखूंगा both the sides के लिए? Let limit L equals to limit x tends to 0 1 + x raised to cosec x। ठीक था ना? हाँ। So taking log on both the sides, so log L will be equals to limit x tends to 0 log of 1 + x raised to cosec x आ जाएगा। Now check the indeterminate form। 0 cosec 0 is infinity। यहाँ पे 0 का तो log 1 0 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल। कन्वर्ट इनटू 0/0 और infinity/infinity। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक वैसे भी किसको पसंद है? कन्वर्ट इनटू साइन log of 1 + x/sin x। अभी चेक करो, द फॉर्मेट इज log 1 is 0, sin 0 is 0। If the format is 0/0, very simple, क्या यूज करने का? यूज LH rule। log of 1 + x का डेरिवेटिव 1/1 + x, sin x का डेरिवेटिव cos x। And very simply, my indeterminate form got vanished। अगर indeterminate form गायब हो गया है तो क्या कर दो? x की जगह पे 0 रख दो, लिमिट का जरूरत नहीं है। We'll get 1/1 + 0 upon cos 0। cos 0 is 1, so 1/1/1। आंसर is 1। पक्का? नो। ये किसका आंसर आया है? ln L का equals to 1। So L will be equals to e⁻1, which is e, which is the same answer we got by this method, e। So you can do it by any way. Power indeterminate forms always take log on both sides. We have some special method for 1⁻∞. We can do 1⁻∞ by this also. No worries. So I hope it is clear. Time is up. Time to say goodbye. See you again. I don't know when we'll meet each other again, but I hope you got something from this lecture. These were the questions like prepared so that you could easily apply the concept of limits many times. So I hope you got something to learn from this. Let's end the lecture here. Next time तक मिलने के लिए bye bye। चलो bye bye, take care everyone। Okay।